नर्सिंग दर हकीकत जज्बे का नाम है। नर्सिंग वो शोबा, वो ताल्लुक जो किसी मरीज के जख्मों पर मरहम रखने और उसकी सेहत की बहाली में अहम किरदार अदा करता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 29 मिलियन से जायद नर्सेज खिदमत इंसान के जज्बे के तहत दुनिया के मुख्तलिफ अस्पतालों में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तैनात पेशावराना महारत से लैस नर्सिंग का अमला खिदमत खल्क की अजीम तरीन मिसाल है। We honor and appreciate the nursing in general and Shifa nursing in specific. Nurses have impact not just in the hospitals but on the society as a whole. No matter how hard the day may be, never forget the purpose and the reason you decided to become a nurse. Nursing at Shifa in last 25 years has come a long way. इंटरनेशनल नर्सिंग डे साल का वो दिन है जब हम नर्सिंग की खिदमात को एक्नॉलेज करते हैं और उनको सराहते हैं। इस दिन की मुनासिबत से मैं तमाम नर्सिंग स्टाफ और ख़ास करके शिफा इंटरनेशनल का नर्सिंग स्टाफ उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो खिदमात वो अंजाम देते हैं और मरीज़ों की सेहत की बहाली के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मरीज़ की सेहत के अंदर अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर का सबसे बड़ा रोल है तो वो नर्सिंग स्टाफ ही है। I just want to acknowledge that's very positive that today we are carrying happiness in our hearts, in our mind, and our spirit. As the coronavirus COVID-19 pandemic unfolded over the last few months, it creates an enormous impact in the lives of many. It is on this regard that I pay salute and respect by acknowledging the tremendous effort of our courageous nurses on the ground. Like always, you have been at the forefront for patients and their families in the war against COVID-19. I salute all the nurses and other healthcare providers who have sacrificed their life. As you stand there for patients and their families, we stand for you. And I also pray for your safety, courage and victory, inshallah. A very happy International Nurses Day. Our College of Nursing and Nursing Education are the best in the region. They are working hard to improve the worth, the knowledge, the skill of each and every nurse at Shifa International Hospital. Our nurses are among the best in the country. Nurses can help you live longer, healthier and even happier lives. And in Shifa International Hospital, our secret to this is that we care for patients and not conditions. We evaluate the whole person and make prevention our priority. Here in Shifa, we focus on patients' care and we are doing our job in a very great manner. We hope to do this in the very same way. Really, I am too much proud कि मैं एज ए स्टाफ नर्स होते हुए ये कमेंट्स दे रही हूँ और हम सब नर्सेज को इसके लिए प्राउड होना चाहिए कि हम खिदमत करते हैं, हम लोग सर्विस करते हैं। Being a nurse, I would say nurse is another word to describe a person who is strong enough to tolerate anything and soft enough to understand anything. We have always kept our patient before us. Not these difficult times while the patient needs more care, and we need to delegation our work and remain persistent and hopeful in our efforts and give our best to the society. As the number of increasing COVID-19 day by day in the world, as a healthcare provider, we can defeat this pandemic with courage, unity and discipline. बीइंग अ फीमेल मैं ये कहूँगी कि नर्सिंग इज़ अ बेस्ट प्रोफेशन और लोगों को इसको ज्वाइन करना चाहिए। On this special day, I want to assure all of you that the board and the management of Shifa International Hospital will continue taking extra steps to make sure that nursing in Pakistan become the best profession in the nation and the region. आम हालात के अंदर नर्सिंग की अहमियत अपनी जगह पर,
लेकिन आजकल की पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो किरदार नर्सिंग स्टाफ अदा कर रहा है उसका शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Happy International Nurses Day to everyone. Nursing is care. Nursing is a noble profession. Nursing is the heart of healthcare. My profession is my passion. We are proud to be nurses of Shifa International Hospital.